Welcome to the course of Sports Psychology. I'm here your course instructor Nazia Yaqub. Our today's lecture is about relaxation in sports psychology. The main content that we will cover today will include relaxation in sports, how it plays a role in sports, then types of relaxation strategies that include physical relaxation strategies and mental relaxation strategies. A detailed description of physical relaxation strategies will be the part of today's lecture that has its subcontents, breathing exercises, progressive muscle relaxation, and biofeedback. At the end, there will be references. So, let's start relaxation in sports. How relaxation plays its role in the sports. Relaxation has been defined as a psychological strategy used by sports performers to help manage or reduce stress related emotions, for example, anxiety and anger, and physical symptoms, for example, physical tension and increased heart rate during high pressurized situations. फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन का बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस रिलेटेड फिजिकल या इमोशनल सिम्टम्स हो सकती हैं किसी भी एथलीट की उनको मैनेज करने के लिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं रिलैक्सेशन बेसिकली वो स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू किसी भी पर्सन के अंदर इन स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस को मैनेज किया जाता है या उनको उनके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है Types of relaxation strategies. There are different types of relaxation strategies that have been advocated within the sports psychology literature and have been categorized as physical relaxation strategies and mental relaxation strategies. इनको बेसिकली टू कैटेगराइज के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं physical relaxation strategies and mental relaxation strategies. The rationale for using either type of strategy often has been dependent on the symptoms described by the athlete. हमारे पास एथलीट जिस किस्म की सिम्टम्स लेके आएगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सी रिलैक्सेशन की टाइप जो है उसे यूज़ करे किस स्ट्रेटजी को यूज़ करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है Researchers have advocated matching the treatment or matching hypothesis, that is relaxation type, to the dominant set symptoms experienced by the athlete. हमारे पास एथलीट जो सिम्टम्स लेके आता है उसके लिहाज से कौन सा हाइपोथेसिस मैच करता है उसको उसकी सिम्टम्स के लिहाज से कौन सी टेक्निक उसके लिए सूटेबल है हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैचिंग हाइपोथेसिस मीन्स symptoms of somatic anxiety are primarily treated with a form of physical relaxation. अगर सोमेटिक सिम्टम्स लेके आएगा पर्सन तो हम उसे फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज के साथ सॉल्व करेंगे एंड सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव एंजाइटी विद अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन और अगर कोई भी पर्सन कॉग्निटिव एंजाइटी के सिम्टम्स लेके आता है तो उसे हम मेंटल रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं अब फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं और मेंटल रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं ये दोनों सेपरेट कैटेगरीज हैं इस लेक्चर में हम फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज को स्टडी करते हैं Physical relaxation strategies can be employed to reduce muscular tension and improve coordination during performance. अगर बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें हम मसल्स के अंदर जो टेंशन होती है किसी भी एथलीट की उसको रिड्यूस करने के लिए और मसल्स की कोऑर्डिनेशन को और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल examples of such strategies taught by sports psychologists include breathing exercises progressive muscular relaxation एंड बायोफीडबैक ये तीन ऐसी फिजिकल रिलैक्सेशन की स्ट्रेटजीज हैं जिनको मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सबसे पहले हमारे पास है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस Breathing correctly is a simple form of relaxation and has the benefits of increasing oxygen in the blood, improving mood, and reducing muscular tension. Further, the process of breathing properly involves diaphragmatic breathing, where the performer is directed to breathe into the abdomen and then the chest. Breathing अगर आप उसका जो एक क्लासिक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या नॉर्मल ब्रीथ भी आप उस तरह से लेते हैं बीइंग एन एथलीट और नॉन एथलीट
तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपका मूड बेहतर हो जाता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने से, और ऑटोमेटिकली मसल्स के अंदर जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है, और कॉन्स्टेंटली वो रिड्यूस लेवल रहता है मसल टेंशन का किसी भी पर्सन के अंदर। फर्दर इसको अगर हम ये कहें कि वो क्लासिक मेथड कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए या डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग होनी चाहिए। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है उसके अंदर, आपके बॉडी का जो डायफ्राम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्रीथ करना चाहिए। पहले आपको जो है अपने स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करके उसे फुल करना है, देन आपने चेस्ट को फुल करना है। इन स्टेप्स को हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। अपना लोअर एब्डोमेन आपने पहले फुल करना है और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन इनहेल करते जाना है उस वक्त तक जब तक आपकी चेस्ट जो है उसमें फुल ना हो जाए ऑक्सीजन का लेवल, और उसके बाद इनहेल करना। ये एक क्लासिक ब्रीदिंग मेथड है। अगर इसको नॉर्मल रूटीन के अंदर यूज़ किया जाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी में भी एथलीट्स को ज़रूरत ना पड़े, मस्कुलर टेंशन इसी से रिलीज काफ़ी हद तक हो जाती है, एस्थमेटिक सिम्टम्स मैनेज हो जाती हैं। Breathing exercises, specifically when breathing in deeply, the performer should concentrate on filling the lungs by first pushing the diaphragm down and the abdomen outward then. पहले आपने अपना लोअर एब्डोमेन जो है उसे फुल करना है ऑक्सीजन के साथ, फिर आपका ऐसे ऐसे एब्डोमेन बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा बाय एक्सपेंडिंग द चेस्ट एंड रेजिंग द चेस्ट एंड शोल्डर्स। और जब आप मजीद इनहेल कर लेंगे तो आपकी चेस्ट जो है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी, आपकी चेस्ट और शोल्डर रेज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, आप इनहेल ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर उसके लिए स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और उसमें फर्दर स्टेप्स ये वाले हैं जो आपको बताएं कि पहले आपका एब्डोमेन आउटवर्ड आएगा, फिर आपकी चेस्ट और शोल्डर्स जो हैं वो रेज होना शुरू हो जाएंगे एक्सपैंड होके। In addition, making the exhalation audible, for example with a hear sound, यानी कि आपकी जो एक्सलेशन है, आपने जब सांस बाहर निकालनी है उस प्रोसेस को आप ऑडिबल भी बना सकते हैं। आप हवा को बगैर किसी आवाज़ के भी खारिज कर सकते हैं, मीन एक्सेल कर सकते हैं, और विद अ साउंड भी आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। It could be of benefit to performance by helping to reduce muscular tension during key movements. ये आपकी कुछ की मूवमेंट्स के दौरान मस्कुलर टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करेगा, सच एज रिलीजिंग द जेवलिन और स्ट्राइकिंग अ टेनिस बॉल। अब ये जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल रूटीन में सांस लेने के लिए, जब आप इसको अपनी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, कोई भी एथलीट या नॉन एथलीट इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेता है, तो उसमें फ़ायदा ही उसको जो है जब कोई स्पेसिफिक आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है उस टाइम इसका फ़ायदा होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेमिना एकदम से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, जैसे जेवलिन की स्ट्राइकिंग के दौरान और टेनिस बॉल के यूज़ के दौरान जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर ज़्यादा। लेट्स सी हाउ दीज एक्सरसाइजेस वर्क। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, पहले हम देखेंगे कि गेम के स्टार्ट होने से पहले आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉक्स ब्रीदिंग का मेथड डीप ब्रीदिंग के लिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन बोथ ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। In this video, we will demonstrate how to use breathing exercises to remain focused in sport. This exercise helps the athlete remain focused using controlled breathing, even after physical activity. Try to find a place like a track or a gym so your athlete will have enough place to run. After a short warm-up, teach the athlete how to breathe properly in order to remain calm and in control. Maintain a ratio of 1 second inhale to 2 seconds exhale. For example, 3 seconds inhale would therefore be 6 seconds exhale. This ratio is tough, especially for beginners, so don't expect to achieve it right away. Try running a 400-meter lap at about 70% pace. Upon reaching the finish, go directly into your controlled breathing.
Don't worry if you aren't at a ratio of 1 to 2 immediately. Your body needs oxygen. Simply do your best to be mindful of your breathing rate at first, and slow it down as you can. Once the athlete is more advanced, you can try 100-meter sprints at about 90% pace. After completion, walk back to the start with the athlete and guide the breathing down. Again, it's not about breathing the perfect ratio right. Basically, better breathing equals better concentration. It's Dr. Joe and Mr. Bear, and today I'm going to show you 2 simple breathing techniques to relieve stress. So let's get started. Disclaimer alert! Disclaimer alert! Before we get started, if you haven't already, make sure and click the subscribe button and make your subscription either public or let me know that you subscribe, because I always try and respond to my subscribers. So for the first breathing exercise or technique, this one is really great. It's nice because it helps relieve stress, it helps relieve anxiety. They actually use it in the military for special ops missions to help relax the military folks before they go into battle or things that will get them really stressed out and anxious. So this is just either called box breathing or square breathing, and it's kind of like it sounds. You have to use a little bit of imagery with this, so even if you have to look at something that's a box, sometimes that helps with your breathing technique. But it's really simple, and so all you're going to do is you're breathing in for 4 seconds. Imagine you're going up the square. Then you're going to hold your breath for 4 seconds. Then you're going to breathe out for 4 seconds. And then you're going to hold your breath again for 4 seconds. So you're really just making that square with that 4 seconds, breathing in, holding it, breathing out, and then holding it again. So this one, if you feel like you're going to pass out, don't keep holding your breath, but it's 4 seconds, so it should be pretty doable. So I'm going to count for you instead of actually holding my breath, just so you can do it. This is great because, again, it's nice and it helps you relax. You can do maybe 4 to 5 sets at a time, just to kind of help get you relaxed. So get in a nice, good, comfortable position so you can really get that breath breathing in. So let's start here. And again, even if you have to make the image with your finger, or if you use your eyes somewhere like a photo or a painting on the wall or something, make sure that you're using that imagery as well, because that helps you relax. So let's start here in the corner. So we're going to go up, 1, 2, 3, 4. Hold your breath, 1, 2, 3, 4. Breathe out, 1, 2, 3, 4. Hold it again, 1, 2, 3, 4. And then breathe in again, 1, 2, 3, 4. Hold your breath, 1, 2, 3, 4. Breathe out, 1, 2, 3, 4. And hold your breath again, 1, 2, 3, 4. So again, mine's usually the hardest is after you breathe out and then you're trying to hold your breath. But again, once you do more, you'll start feeling that you have more strength in your lungs to do it and hold it pretty easily. So again, maybe 4 to 5 times. It just depends on how stressed out you are. A lot of times, even like if you're going to the doctors or something, you get a little anxious with that. If you do some of that in the waiting room, that'll help you kind of relax and calm down. So it's a really nice technique to use almost anywhere, but especially when you have a lot of stress or anxiety. So the next breathing technique is going to be when you're breathing out with pursed lips. And what pursed lips do is it makes your lungs work harder because the opening is smaller. So again, don't keep going if you're feeling like you're passing out. Maybe do less seconds for it, but really try and build up to it. It's going to help your lungs get stronger. It's going to help relieve your stress and your anxiety and just kind of help relax you in general. So for this one, what you're going to do is you're going to do some belly breathing, or the diaphragmatic breathing. And that's really just breathing in through your belly instead of through your chest. And sometimes it's hard to get that down, but if you put your hand on your belly, you can feel it go in and out, and that's a good way to get that belly breathing. So you're going to breathe in through your belly for 4 seconds, and then you're going to purse your lips and breathe out for 8 seconds. So again, I'm going to count for you so you can do it along with me if you want to, instead of actually doing the technique itself. But I'll kind of start with my pursed lips for you just so you can kind of remember to do that.
So let's start again. And again with this, you can do it anywhere from, 3 to 5 reps just to kind of get you nice and relaxed. So if you want to put your hand on your belly, you can. And so you're going to breathe in for 4 seconds. So 1, 2, 3, 4. Purse your lips and breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you can see that's a little bit longer than you would think. So I will do it once just so you can see. If you can't get all the way to that 8 seconds, that's okay. But the more you do, I think the easier it'll be. So breathe in. And you can make those noises while you do it too. So that was 8 seconds. And so if you can blow the whole time like me, that's great. But if you can't, that's okay too. Try and get to 6. Next time, try and get to 7. Next time, try and get to 8 seconds. But again, both of these breathing techniques, you don't have to do them back to back because sometimes it might make you feel a little bit lightheaded if you haven't done this for a while. Again, don't go until you feel like you're going to pass out or anything. This is really supposed to kind of help relieve the stress, relieve that anxiety, and just help you relax in general. So you have seen the deep breathing methods. First one was about general deep breathing, and the second one method was about box breathing, box deep breathing, and the more frequently used method nowadays. Now let's see progressive muscular relaxation technique. It's derived from the work of Edmund Jacobson in 1930s. PMR strategies require an individual to focus on progressively tensing and then relaxing specific muscle group one at a time. बेसिकली पीएमआर के अंदर होता क्या है कि हम पहले अपने बॉडी के किसी एक मसल को टेंस करते हैं, फिर उसे रिलैक्स करते हैं, और ये प्रोग्रेसिव मेथड है। पहले एक मसल को टेंस करेंगे, फिर उसे रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरे मसल को टेंस करेंगे, फिर उसे रिलैक्स करेंगे। इस वजह से इसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने से पहले उसमें टेंशन भी क्रिएट की जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एथलीट या नॉन एथलीट पर्सन जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है वो उस रिलैक्सेशन को डीपली फील कर सके, जो उसके उस मसल के अंदर टेंशन थी उसके मुकाबले में उससे अब कितना रिलैक्स फील कर रहा है, ये कंपैरिजन वो क्लियरली कर सके। Now, through this progressive technique, Jacobson's premise was that the individual would learn the difference between tension and less tension. इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से क्या होता है कि एथलीट टेंशन और लेस टेंशन में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एथलीट के अंदर पहले टेंशन क्रिएट करते हैं उस मसल में। जब ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा मसल पहले इतना टेंस नहीं था, अब ज़्यादा टेंस है। और फिर जब हम रिलैक्स करवाते हैं उसको, तो वो उस रिलैक्सेशन को भी फील कर सकता है, और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा मसल मैक्सिमम टेंस इससे पहले था, अब मेरा मसल रिलेटिवली रिलैक्स है। Consequently, the individual would become aware when tension occurred and begin reducing it by relaxing the relevant muscles. It further reduces mental tension. As a result क्या होता है, पर्सन जो है अपनी बॉडी से इतना अवेयर हो जाता है कि जब उसे ज़रा सी भी टेंशन उसकी बॉडी में क्रिएट होती है तो वो उस चीज़ को फील करना शुरू कर देता है कि आई एम फीलिंग टेंस इन दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और बॉडी मसल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने उस मसल को रिलैक्स करने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। और जब वो ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन के लिए स्टार्ट करता है एफर्ट्स, तो वो मेंटली भी रिलैक्स हो जाता है। फिजिकली जो फटीग होती है, फिजिकल टेंशन को रिलीज करने के लिए जब पीएमआर की एक्सरसाइज को यूज करता है तो ऑटोमेटिकली मेंटली वो खुद को रिलैक्स कर सकता है। Critically, Jacobson's program was quite long and consequently inappropriate for the regular athlete. अगर इसके ऊपर क्रिटिसाइज देखा जाए तो ये वाकई में काफ़ी लंबा मेथड है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर काफ़ी सारे मिनट्स यूज़ होते हैं। 45 मिनट्स का जो एक क्लासिक टेक्निक है उसमें 45 मिनट्स लगते हैं कम से कम रिलैक्सेशन में। लेकिन अब क्या हुआ है आने वाले टाइम में कि टू ओवरकम दिस इशू मैनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सच एज Graham Johns have advocated a variant of Jacobson's approach where the objective is to teach a performer to relax within 20 to 30 seconds.
अब उस 20 से 25 मिनट या 45 मिनट के का जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, उसको श्रिंक करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया गया है और परफॉर्मर्स को इतना उसमें उन्होंने ट्रेनिंग के साथ उसमें ट्रेन कर लिया है कि वो 20 to 30 सेकंड के अंदर जो है रिलैक्स हो जाते हैं। टू अचीव दिस, अ परफॉर्मर विल अंडरगो सेवरल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग phases typically over a period of 10 to 12 weeks। ऐसा करने के लिए पहले उनको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर जाना पड़ता है 10 से 12 वीक तक कंटिन्यूसली। दैट प्रोग्रेस टूवर्ड्स मच क्विकर रिलैक्सेशन, जो ऐसा ऐसा ज़्यादा जल्दी रिलैक्सेशन की तरफ उनको ले जाता है। द फर्स्ट ट्रेनिंग फेज इन्वॉल्व ट्वाइस डेली 15-minute relaxation sessions where the muscle groups are progressively tensed for 5 to 7 seconds and relaxed। अब इस ट्रेनिंग फेज के अंदर क्या होता है कि एक ही जो ट्रेनिंग है 15 मिनट्स की उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, उसको ट्वाइस डेली प्रैक्टिस करना होता है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनको प्रोग्रेसिवली पहले 5 से 7 सेकंड के लिए टेंस करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड के अंदर पहले 5 to 7 सेकंड के लिए टेंशन क्रिएट की जाएगी, उसे टेंस किया जाएगा और फिर बाद में उसमें रिलैक्स की फीलिंग्स जो है वो आएंगी, उसको रिलैक्स किया जाएगा। अब ये 5 to 7 सेकंड की टेंशन की फेज है और इतना ही तकरीबन रिलैक्सेशन का दौरानिया होगा। फिर ये 5 to 7 सेकंड जो हैं बॉडी के तमाम मसल्स के लिए आप इसको देख लें कि हैंड्स, फीट, आर्म, नेक, शोल्डर, लेग, हर चीज़ बॉडी, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, ये सारे बॉडी के आपके मसल्स जितने भी हैं उन सब के लिए ये वाली टाइमिंग उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है। ऐसा करने से एक ऐसी स्टेज आती है कि पर्सन सेकंड्स के अंदर अपनी जिस स्पेसिफिक मसल के अंदर टेंशन फील कर रहा होता है उसको फौरन से टेंस करके रिलैक्स कर सकता है और ऐसा बार बार प्रैक्टिस की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। During this phase, it is commonplace for the athlete to be provided with an audio track that helps systematically work them through a full muscular tension or relaxation program। अब अगर एथलीट्स को आपने ये चीज़ प्रैक्टिस करवानी है तो उनके लिए आपको पहले एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए साथ में एक साउंड या म्यूज़िक ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो अपने मसल्स को पहले टेंस कर सकें और फिर रिलैक्स कर सकें। यानी कि जो 5 to 7 सेकंड एक अलहदा टोन आनी चाहिए, अगले 5 to 7 सेकंड्स के लिए अलहदा टोन आनी चाहिए, तो वो रिलैक्सेशन और टेंशन की फेजेस को डिस्क्रिमिनेट कर देगा। Once practiced so that the performer is proficient in using this technique, जब एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो परफॉर्मर जो है उसको वो इस टेक्निक को सीख जाता है, इस फेज में से एक दफ़ा गुजर जाता है। A 5 to 7 minute release only training phase is activated। तो उनके अंदर 5 से 7 मिनट की रिलीज ओनली ट्रेनिंग फेज जो है एक्टिवेट करवा दी जाती है। पहले क्या था, मसल्स को टेंस किया जाता है, देन रिलैक्स किया जाता है। अब सिर्फ हमने रिलीजिंग फेज जो है उसको करना है, तो 5 to 7 मिनट्स की रिलीजिंग फेज की तरफ ऐसा ऐसा हम एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। हम मसल को अब टेंस नहीं करते, हम सिंपली रिलैक्सेशन की फेजेस जो हैं वो लेके आते हैं। Here the performer is guided by an audio track or by the sports psychologist only to relax or release any tension in the muscles। क्योंकि ऑलरेडी वो किसी भी मसल के अंदर टेंशन फील कर रहे होते हैं। अब इस टाइम के दौरान 5 से 7 मिनट का दौरानिया है, उसमें उस ऑडियो ट्रैक के थ्रू उन्होंने सिर्फ अपने मसल, किसी स्पेसिफिक मसल में अगर वो टेंशन फील कर रहे हैं तो आप वो उसको रिलैक्स करेंगे, वो टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे अब वाली फेज में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सारी ट्रेनिंग में से गुजर चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ रिलीज ओनली स्टेज के अंदर रहना है। The next progression is a 2 to 3 minute cue controlled phase where the focus is still on release only, but the release is instigated by the performer through words such as relax। अब क्या हुआ, हमने पहले 5 से 7 मिनट की रिलीज ओनली स्टेज ली, देखिए 15 मिनट की फुल ट्रेनिंग थी, 5 to 7 मिनट्स की रिलीज ओनली स्टेज आई, उसके बाद अब क्यू कंट्रोल स्टेज आ रही है। क्यू कंट्रोल स्टेज में 2 से 3 मिनट के दौरानिया मैक्सिमम हमें चाहिए। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपने किसी भी स्पेसिफिक मसल के अंदर जो एक टेंशन होती है उसे रिलीज कर देता है, लेकिन विद अ स्पेसिफिक वर्ड, यूजेज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड और एनी फ्रेज जो जिसमें वो रिलैक्स फील करे। जैसे
रिलैक्स वर्ड है। जब भी उसने अपने आप को रिलैक्स करना होगा फिजिकली, वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करेगा और उसकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। और ये ऐसा कब होता है? जब बार बार ट्रेनिंग से पर्सन खुद को इस चीज़ तक लेके आता है, इतना ट्रेन कर लेता है, तब ये फेज आती है एथलीट्स के अंदर। Sometimes, rather than associate the relaxed state with a cue word, sports psychologists link the relaxed state to a natural trigger cue within the athlete's environment. बाज़-औक़ात वर्ड अगर एसोसिएट ना करने हो तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उसे किसी न किसी ट्रिगर के साथ अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रिपिंग द रैकेट इन टेनिस। रैकेट को ज़ोर से ग्रिप करना, ये भी उनके अंदर रिलैक्स की फीलिंग को लेके आएगा। या होल्डिंग अ बास्केटबॉल प्रायर टू अ फ्री थ्रो। फ्री थ्रो से पहले बास्केटबॉल को पकड़ना और उसमें मुकम्मल तौर पर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, ये फेज आ सकती है। यानी किसी भी स्टिमुलस को साथ अटैच कर लिया जाए या किसी वर्ड को अटैच कर लिया जाए in order to relax your body. This phase is therefore only a few seconds long and involves the performer recognizing tension in specific muscles and focusing solely on reducing that tension. इस फेज में क्या होता है कि चंद सेकंड की ये फेज है जिसके अंदर एथलीट जो है या परफॉर्मर जो है वो रिकग्नाइज करता है कि किन मसल्स में टेंशन है और उसे फौरन रिलीज करता है। Preliminary research by and Minard and colleagues has shown that PMR can help to reduce the intensity of reported bodily symptoms associated with the experience of anxiety, for example, muscular tension. According to studies, PMR जो है मसल टेंशन को रिलीज करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन प्रैक्टिस है। और इसकी हेल्प से जब मसल रिलैक्स होते हैं एथलीट्स के तो उनके अंदर एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो जाती है ओवरऑल। Now let's see how PMR works for athletes. Begin by allowing your body to get more comfortable wherever you are right now. Take some full, slow breaths in through your nose and out through your mouth. Allow any distracting thoughts to come and go as if you're watching them floating down a stream. And guide your attention back to your slow and easy breathing. When you're ready, breathe in and make a tight fist with your right hand. Hold and focus on what that tension feels like to you. Now, breathe out and release all the tension in the fist. Let your hand become nice and loose. Again, make a tight fist with the right hand and hold it. Then, let the tension and the hand relax fully. Focus on what your hand feels like to you when it is relaxed. Next, slowly breathe in and bring your right forearm up to your shoulder and tighten your upper arm. Hold. Now, breathe out and release. Again, make a muscle with your right arm. Hold and focus on what the tension feels like in your upper arm. Now, breathe out slowly and relax your arm. Breathe in, and now make a tight fist with your left hand. Hold the tension. Exhale and release. Let the tightness and discomfort flow all the way out of your hand.
Again, make a tight fist with your left hand and hold. Exhale and release. Breathe in again and bring the left forearm up to your shoulder to make a muscle. Hold and focus on the tension in your arm. Slowly breathe out and release. Notice how that feels. Again, make a muscle with your left arm and hold it there. Now exhale and release. Now take a long breath in and raise your eyebrows as high as they will go. Hold. Exhale and release, letting relaxation smooth across your forehead. Breathe in again and raise your eyebrows as high as they will go. Hold. Release and breathe out slowly. Next, squeeze your eyes tightly shut and make a tight smile. Notice how that tension feels. Breathe out and release, relaxing your eyes and cheeks. Breathe in again and squeeze your eyes closed. Hold. Exhale and release the tension. Now, slowly open your mouth wide and hold it there. Exhale and release. Notice what that feels like to you. Again, open your mouth and hold. Release and breathe out slowly. Next, slowly and carefully pull your head back as though you are looking up at the ceiling. Hold. Exhale and slowly return your head to whatever position is most comfortable to you. Study what that relaxation feels like to you. Again, breathe in and pull your head back slowly. Hold. Exhale and slowly release. Inhale and push your shoulders up towards your ears. Hold them there for a moment. Exhale and release. Let all of the tightness flow completely out of your shoulders. Again, breathe in and bring your shoulders up
Hold them there for a moment. Exhale and release. Let all of the tightness flow completely out of your shoulders. Now, breathe in and push your shoulder blades back, trying to almost touch them together. Hold that tension. Now, exhale, letting your shoulders and chest relax all at once. Again, push your shoulder blades back and your chest forward. Hold. Release and breathe out slowly. Breathe in slowly. And now let your chest and stomach expand all the way, like a balloon filling with air. Hold. Slowly exhale, releasing all the tension from your chest and stomach. Again, breathe in fully and let your stomach and chest push out. Exhale and release. Next, tighten your thighs so that you're pushing yourself up a bit out of your chair and hold. Exhale and release, taking note of what it feels like in your upper legs. Again, tighten up your thighs and hold. Exhale and release. Now, slowly pull the toes on your right foot up toward your shin, stretching your calf muscle. Hold the tension. Exhale and release. Again, pull your toes up, tightening your calf muscle, and hold. And release. And breathe out slowly, noticing what that right foot now feels like to you. Breathe in, and now curl the toes of the right foot downwards and hold that tension. Exhale and release. Again, curl the toes of your right foot downwards and hold. Exhale and release. And study what that feels like. And study what that feels like. Next, slowly pull the toes on your left foot up toward your shin, stretching your calf muscle. Hold the tension. Exhale and release.
Again, slowly pull your toes up, tightening your calf muscle, and hold. Exhale and release. Breathe in, and now curl the toes of the left foot downwards. Hold. Exhale and release. Again, curl the toes of your left foot downwards and hold. Breathe out slowly and release. You have done a great job going through this relaxation exercise. Continue to take some slow, easy breaths. For the next few moments, just notice what your body feels like and enjoy the success you've had in being able to relax your body. Keep that feeling with you throughout the day and remember how good it can feel to be relaxed in your body. Whenever you're ready, take some time to slowly wiggle your muscles around a little. Then, count backwards from 5 to 1 to end this exercise. Now, biofeedback, similar to PMR, in which performers are taught to become more aware of muscular tension. बायोफीडबैक में परफॉर्मर्स को हम इस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं कि वो अपनी मस्कुलर टेंशन के साथ जो है वो ज़्यादा अवेयर रहें, उसको ज़्यादा फील करें और अंडरस्टैंड करें कि उनकी बॉडी क्या कह रही है. Biofeedback is a method that helps performers become familiar with such automatic nervous system responses as muscular activity, heart rate, HR is for heart rate and respiration rate. इन एक्टिविटीज़ के साथ अवेयर रहना जो है वो बायोफीडबैक के अंदर हम ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं कि उनके स्पेसिफिक मसल्स की एक्टिविटी करंट मूवमेंट में क्या चल रही है, करंट मूवमेंट में हार्ट रेट क्या है और रेस्पिरेशन रेट क्या है. By becoming more aware of these and other physiological responses, performers can then attempt to control them for the benefit of supporting performance. अगर वो इन चीज़ों से अवेयर रहते हैं तो वो अपने परफॉर्मेंस को ओवरऑल ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं. Biofeedback training involves the use of electronic instruments to provide visual or auditory feedback about selected physiological responses and requirement of the performer to then use such strategies as relaxation to reduce the level of these responses. जितने भी किसी भी एथलीट के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर हो रही हैं बायोफीडबैक ट्रेनिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आजकल यूज़ हो रहे हैं जिनके थ्रू एथलीट को परफॉर्म करते हुए प्रैक्टिस के दौरान ऑडिटरी फीडबैक मिलता है या विजुअल फीडबैक मिलता है दैट यू आर परफॉर्मिंग दिस टास्क एक्यूरेटली और नॉट. फॉर एग्जांपल वेट लॉस है या फिजिकल स्टेमिना जो है बिल्ड करने के लिए सस्टेन करने के लिए एथलीट्स को स्पेसिफिक लेवल तक जाना पड़ता है. स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ उन्हें इंटेंसिटी की डिफरेंट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती हैं. वो उतनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें बायोफीडबैक के थ्रू पता चलती हैं जो ऑडिटरी या विजुअल फॉर्म में उनको प्रोवाइड किया जा रहा होता है. For example, if using an electromyograph to measure the electrical activity of the muscles, a high amount of electrical activity may mean muscle tension. जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफ के अंदर अगर हम किसी भी पर्सन की मसल एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकली मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि उस मसल के अंदर ज़्यादा टेंशन मौजूद है.
तो उस पर्सन को अपने उस मसल टेंशन को रिलीज करने के लिए जो है वो रेलिवेंट एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए. Consequently, visual feedback showing high level could help the performer become aware that muscular relaxation is needed when experiencing sensations associated with that level of activity. एज अ रिजल्ट जो विजुअल फीडबैक है उसमें हमें विजुअल ग्राफ्स की फॉर्म में या जिस तरह से हमारे पास एलईडी डिस्प्ले आता है उसकी फॉर्म में या जिस तरह से हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले हो जाता है इस फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें विजुअल फॉर्म में नज़र आती है वो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे मसल्स कितने रिलैक्स हैं और कितने टेंस हैं. उससे बायो फीडबैक के थ्रू हमें अपने मसल्स की एट दैट मोमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है. अगर मसल ज़्यादा टेंस हैं तो हमें रिलैक्सेशन के लिए रेलिवेंट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. दिस मेथड डज रिक्वायर सम ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज पीएमआर. अगर उनके मसल ज़्यादा टेंस हैं तो उन्हें पीएमआर यूज़ करवाई जाती है, सजेस्ट की जाती है कि इसे यूज़ करें ताकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो सके अगर करंट मूवमेंट में उनकी बॉडी के अंदर मसल टेंशन ज़्यादा है. Now let's see how biofeedback products are working nowadays. Here with TRX, I wanted to talk about a new way to take advantage of technology. And when I say technology, I don't just mean ones and zeros. I mean really a platform of how we learn, how we create concepts, and then how we put them to work in the gym or out on the field. This whole idea of making sure people move better is what we've tried to build our training philosophy on. But at the end of the day, there's so many different ways that we can either catch things that aren't there or miss things that are there. Being able to jump into an area that no one's really talking about in the industry, which is pressure. We always know that force into the ground is going to be a key determinant for performance, whether it's squatting, whether it's lifting, whether it's running, but not just the amount of force that's going into the ground, but the quality of that force that's going into the ground, how you're actually putting pressure into your foot. Now, I was lucky enough long ago back at the University of New Mexico to be working with a lot of pressure maps to look at people's gaits. It wasn't until BodyTrack came along, I got introduced to them about a year ago, where we start to combine both force and pressure to be able to talk about not just the quality of a movement, but the quality of your coaching. The idea is, can I get someone to move the way I want them to move? When we look at them, we might even be able to have a good eye and say, hey, kinematically they're moving well. Hey, I'm assuming now that they're putting better force into the ground. I'm assuming that their mechanics into the ground are money. But now I have a way to double check both for confidence in my athlete, but really to be able to check on myself, because I don't want to do things just because I think they're working well. I want to get immediate feedback on how well they're actually doing those things. So what I'm going to have Miguel do is step up here just into the center of the mat. And so then I'll be able to get a nice little heat map and center of pressure on what's going on with him. I'm just going to normalize him here. Stand still for a second. Nice. And now, nice and easy, you're just going to go through 3 squats, whatever feels comfortable, go as deep as feels comfortable at your own pace. I get a little bit of feedback right away on it. And relax for a second. So now I'd be able to dive back in here, look at left to right, how's the pressures going, how the forces are going. So I'll be able to get some feedback, but more importantly, I can now put Miguel in an environment where he's getting immediate feedback on how well things are working. And now as a coach, I can coach even better by saying less. At the end of the day, coaches seem to overcoach quite a bit. In my opinion, the role of the coach is to create an environment where the athlete or the student or the client can learn better. And sometimes that means letting me be quiet and letting them find their way to do this. So, Miguel, I'm going to have you take a look at that. So tell me what you see right there. Don't try to overanalyze it. Look at left to right feet. What's going on left to right feet? Heavier on the left. Good. So here's what I want you to do. I want you to go through 3 squats. I want you to try and see left to right be even. And see how these little heat maps are showing up here. I want you to try and keep those nice in your heel, or just feel like you're pushing through your ankle, and go through 3 squats and just kind of mess with your positioning until you see it looks good. So go for it. Oh, that's cool. Oh, much better. Good. Nice. So not bad. That last one kind of sucked, so here's what we're going to do. We're going to do I thought another it was round of good. 3. No, you were all over the place on that one. So now, get your... Another circle out there. So go ahead, close your eyes for a second. Get heavy in your feet. Feel like you're trying to push your feet through the ground. Open your eyes. That's kind of your baseline. Let me see if you can go through 3 squats where you don't see a whole lot of change in those pressures as you walk through it. Go for it at your own pace.
and relax. So basically what you get to see him do is self-correct. I don't have to give him any feedback. Now what we might do is we might go out and do a training session out there, pick up on a few things, whether it's hamstrings or glutes, a little bit of anterior-posterior shift on there, and then come back after we get through, not the entire workout, I don't want him to be fatigued, but when I think he's moving well, come back and do a double check, both from a coaching standpoint and from an athlete standpoint. And now there's no way to hide from any of these things. These coaching cues, I think that might be working with them. We find out, but at the end of the day, being able to put them in an environment where they can get immediate feedback and make those micro adjustments themselves, that's going to be the sense I want them to feel when they're on the mat, when they're on a kettlebell, when they're under a bar, when they're on the straps, and so they start to take control of their own body. And I get to take credit as a coach by building the environment where they get to learn and they get to take credit for their own learning pace. And we wouldn't be able to pick this up without a concept of what's the quality of the force going into the ground, how am I managing left to right, front to back, and then what do they do from an internal feeling standpoint to get them better. And then if I ran across an athlete that wasn't quite as in touch with their body as Miguel, then I have to start to come back to different types of either tactile cueing, verbal cueing, and we get all the visual cueing we need from here. Now here are the references from where the data is drawn. If you have any queries and feedback about today's lecture, you may contact me on the given email address. Thank you very much.